गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है हमारा 6th डे ऑफ ट्रैवलिंग और हम हैं आज भी फ्लोरेंस में और हम जा रहे हैं द वेरी हिस्टोरिकल बिल्डिंग देखने के लिए जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस बिल्डिंग इन इटली। And I even got my toy with me. Yeah, you got a Christmas toy. My dad brought it for me. He brought. He brought it for me. Yeah. So हम जा रहे हैं पीसा बिल्डिंग। सो ये इसलिए भी ज़्यादा फेमस है कि ये मेन बिल्डिंग है, थोड़ी टिल्टेड है एंड बेसिकली इट्स अ बेल टावर बट हमारी ट्राम आ गई है और हम चलते हैं अपनी ट्राम में, फिर वहाँ से हमने लेनी है ट्रेन। सो आज मंडे इसलिए ट्राम में रश नहीं है एंड कल इतना ज़्यादा रश था कि खड़े खड़े गए हम लोग एंड वेदर इज़ सो प्लेजेंट। लगी है पर बाहर निकली यहाँ विंटर्स है तो ऑब्वियसली ठंडा है, इवनिंग तक काफ़ी ठंडा हो जा रहा है। तो बस अब यहाँ ट्रैक से हम लेंगे ट्रेन और फिर ट्रेन से आई थिंक इट्स 1 आवर, ट्रेन विल टेक 1 आवर टू रीच देयर। तो चलिए फिर ट्रेन स्टेशन एंड यू विल ड्रॉप ऑल्सो। हम पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन and there is a yummy chocolate shop which ये लंदन में भी है इसका ब्रांच। This is famous for their a special kind of ice cream। देखिए चॉकलेट मेल्ट होता हुआ फाउंटेन। What is this? What is this? Don't put in your mouth. No. Beautiful Christmas tree in the station. Something there. It's full of Lego. What is it? How is this Christmas tree? Do you want to write any letter for Santa? What? What do you want to say to Santa? I already did it in my school scribble. So not here. और ये है हमारी ट्रेन से हमें जा कुछ सीटें अप स्टेयर से और कुछ सीटें डाउन। कोई सीट साइड में है so आप कहीं भी बैठ सकते हैं। ट्रेन के अपर फ्लोर में इज द फर्स्ट टाइम ऐसी मैंने कोई ट्रेन देखी है जिसमें आप एक डेक और है। काव्या इज more interested to play। स्टेयर से ऊपर एक कुछ ऐसी सीटें हैं, कुछ टू सीट्स। बाहर का वेदर भी सनी है काफ़ी बट ठंडा भी लग रहा है। Hello guys, my name is Kavya and today Where are you going? Pizza. Not pizza, it's Pisa Tower. Pisa Tower. Pisa is a small town, village in Italy, and that Pisa Tower is there in the Pisa village. You know, it's a lean building. Yeah, it's a lean building. Are you excited to And see I the gave my lean dad building? I gave my dad to play with my toy because I didn't play with it, so he took it to play with. Okay, now you play and enjoy. My dad, I'm not playing. I want to join the train and talk to you. And this is a really special train because it has so many floors. One floor only. Yeah, it's like bus. You travel in the upper seat of the bus also, upper floor of the bus. So it's like that only. I'm also sitting first time in this type of train. This is only. So train हो गई है स्टार्ट और बाहर देखिए ऐसा लग रहा है इंडिया के ही घर और इंडिया के ही जो ट्रेन से आसपास दिखते हुए बिल्डिंग्स और छोटे मोटे घर थोड़े बहुत शॉप वैसे ही दिखेंगे। और एक्चुअली में ये सिटी में भी ज़्यादातर वही इंडियन टाइप के ही कॉन्सेप्ट है। बिल्डिंग घर के अंदर काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक सिमिलर है इंडिया से और
यहाँ के लोग, और यहाँ पर लैंग्वेज का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ भी लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। बहुत ही कम लोग हैं जो आपको मिलेंगे जो इंग्लिश में आपको जवाब दे देंगे। अदरवाइज़ किसी से कुछ पूछना या किसी से कुछ कहीं जाने का कोई रास्ता पूछना या कोई बात करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बहुत ही कम है जो टूटा फूटा इंग्लिश बोल रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ फुल उनकी नेशनल इटालियन लैंग्वेज है जो वही चलती है। इनफैक्ट ट्रेन में जो अनाउंसमेंट है या कहीं भी कोई अनाउंसमेंट है, इंस्ट्रक्शन बोर्ड्स है, सब कुछ इटालियन लैंग्वेज में ही लिखे गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन है, बट यूजुअली अगर आप लोगों से बात करेंगे तो बहुत ही कम है जो समझ पाएंगे आपकी इंग्लिश। व्यू ट्रेन की जर्नी का अलग ही मज़ा है। ब्यूटीफुल माउंटेन्स, ब्यूटीफुल हाउसेस एवरीवेयर, द ब्रिजेस, वाटर। खेत ही खेत है सब जगह पे, पेड़ खेत, कहीं पर थोड़ी बहुत ग्रीनरी है, कहीं पर सूखे पड़े हुए खेत है। तो शायद में भी अभी फार्मिंग का टाइम है जो बन का दूर दूर पहाड़। ऐसा लग रहा है कि अभी हम देहरादून में ही कहीं अंदर घूम रहे हैं, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के आसपास। तो बिल्कुल देहरादून जैसा ही व्यू लग रहा है। कहीं भी जाते हैं तो इंडिया के काफ़ी सारे सिटीज़ सब कुछ ना कुछ सिमिलर लगी जाती है आउट ऑफ कंट्री में। तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम इंडिया से बाहर हैं, बिल्कुल ही लग रहा है अभी इंडिया में ही हैं। बट चलिए अभी तो देखते हैं। अभी जिस विलेज में हम जा रहे हैं वो तो एक मेन टूरिस्ट स्पॉट है, मेन अट्रैक्शन स्पॉट फॉर द टूरिस्ट। तो उस विलेज में कैसा है तो आपसे अभी इस व्यू के साथ के बाद अब सीधा वहीं में आके मिलते हैं। हम पहुंच गए हैं स्टेशन बिल्कुल 1 घंटे में। इट्स 2 o'clock और अब यहाँ से बाहर निकलकर हमें लेना है बस। और बाहर बसेस लगी हुई हैं। पीसा स्टेशन जहाँ हम आए हैं ट्रेन से, और उसके जस्ट बाहर निकल कर ही यहाँ बस स्टैंड है। तो बस इस बस स्टैंड से ही हमें मिलेगी बस जो 15-20 मिनट्स मैक्सिमम, लाइक 15 to 20 मिनट्स में हमें वहाँ पहुँचा देंगे। तो इस सिलसिले बस है। यस काव्या, नो आई डोंट नो, दैट इज बैड, यू कैन गेट डाउन, वी आर नॉट वॉकिंग, जस्ट वी हैव टू स्टैंड हियर ओनली, वी हैव टू वेट फॉर द बस। तो मिलते हैं पिज़ा टावर पे। पहुंच गए हैं अपने पीसा टावर की मंजिल के लिए। एंड देयर इज़ अ स्मॉल मार्केट विद अ स्मॉल शॉपिंग। मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ बिकॉज इफ आई शो माई फेस ऑन द कैमरा देन आप अच्छे से नहीं देख पाओगे। सो आप मेरे पीछे देखेंगे स्मॉल शॉप्स आर हियर। Oh my God, it's such a big market. पूरा फुल मार्केट स्टॉल्स है यहाँ पर। तो एक बार हम अंदर होके आते हैं, उसके बाद यहाँ से हमें जाना है अंदर, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ आपको मैं दिखाती हूँ एट द बिल्डिंग व्यू। तो चलिए और क्लोज में जाकर ब्यूटी को देखते हैं। Look at this. It's so beautiful. काफ़ी फास्ट वॉक करते हुए सोस टावर के साथ साथ ये अलग से भी कुछ है यहाँ पर। सो द टावर इज बेसिकली अ बेल टावर। वैसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। लीन टावर, बेल टावर। और अभी हम अंदर जाते हैं। एक्चुअली इसके स्टेयर्स से आप भी जा सकते हैं काफ़ी ऊपर,
लेकिन काफ़ी इतना वॉक नहीं कर पाएगी. सो मैं और काव्या नीचे ही रहेंगे. सो वी हैव टू बाय द टिकट फॉर दैट. सभी लोग फोटोज क्लिक कराने में बिजी हैं. सो नाउ विल गो इनसाइड. इट इज और ये आई थिंक कोई चर्च है पास में. तो हम जाकर अंदर जाके देखते हैं. गोइंग फॉर द टिकट. So here is the bell tower, the lean tower of Pisa, and this is the church. अभी अंदर जाकर ही पता चलेगा ये क्या है. And the special moment for us, the best moment to visit the Italy. हमें काफ़ी सारे इस तरीके के monuments देखने को मिल रहे हैं. Just which is the world famous monuments. तो चलिए आगे चलते हैं. Here is the close video of the building. Basically एक simple building है, अंदर कुछ ऐसा नहीं है, but one of the popular tower. No, you want to eat pizza? This is Pisa building, not pizza. So you're thinking that they'll give pizza to daddy inside? No pizza, nothing else. Only he'll go there and he will say bye bye to us from up. Okay? And then he get down again. Huh? And then he'll get down again. Yeah, then because it's not allowed to stay there for so long. Okay? No, I want to down after he says bye. No. Acha, can you tell me anything about this building? I can't go up. Yeah, you can't go up. That's it only you have to What say. is it up there? Huh? What that? What The is green one with the line. Huh? So that's the tree up there. That's something. They have, you see, that's a rope. They have tied with the ropes. So काव्य को जाना है Is that ऊपर the jail? और उसको. Is that the jail? No, it's not a jail. Huh? Jail. Jail? Okay, that's, yeah, maybe. So if you will go there, they will lock you inside the jail. उसे जाने का हो रहा है ऊपर मन, but क्योंकि इतने सारे स्टेयर्स चढ़ना बहुत मुश्किल है, तो हम दोनों यहीं घूम के एंजॉय करेंगे. हाँ, then 8 years, when you will be 8 years old, But then if I'll be under 8? under 8, then हाँ, under 8. No. If they say under 8, then I can't go. Under 8 can't go, yeah. So for that you have to be 9 or 10. But I'm 4. So 4 you're small. That's why it's not allowed. Angel Didi also can't go. Angel Didi also can't go because she's 8. Only Dupi Didi can go. No one else. Because she's only 12 years old. Not Arnab Bhaiya, not Meenakshi Shanmukh. No one can go there. But money. You are 4 years old. If they can't go, then how can you go? Huh? They'll not allow anyone or the kids. You are only saying it's 8-year-old kid can go. Okay. 8 So years let's. can't go. 8 years can't go. 9 plus only can go. You see now daddy is coming. But I'm under 5. So under 5, Kavya, under 5 is not allowed. Okay. तो अभी काव्या को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है. अंडर 5 तो उसे लग रहा है कि उसे जाना है, बट बिकॉज किड्स आर नॉट अलाउड. देखिए क्या मॉडर्न तरीका है. ऑटोमेटिक और बैटरी ग्रास कटर मशीन जो ट्रिम कर रही है. ट्रिमिंग द ग्रास. Now it's moving and going. It's like a robot, that mop robot which we had in Bangalore. It's like the same. Okay. That time you were running behind the that mop robot when you were small. This is the Taj Mahal के आसपास के Where's Daddy? एरिया की फीलिंग हो रही है. Where's Daddy? Daddy is up. Is he down there? No, just now he has entered inside.
कम। ताजमहल की मैंने बात की और ताजमहल का ही पोज यहाँ पर बन रहा है। तो बस हम दोनों अभी चर्च में एंट्रेंस दूसरी साइड से है तो वहीं जा रहे हैं। एंड काव्या हैप्पी नाउ? हैप्पी? But I still want to go to the Pisa Tower. Pisa Tower, when you'll grow up then only you can go. Come. Okay, come. We'll be side. हाँ, then only you can go. अंदर I don't think so कि photos allowed होंगी. Photos not allowed. Photos not allowed. Yeah, and if you make any video, then not allowed. They'll take you to the jail. Oh, sorry. Then I'll not shoot anything. Inside you can't shoot. Yeah, inside we can't. You need a ticket. A free pass ticket. Okay, free pass. Okay, then come. Let's go. Fast. इससे पहले ये बंद हो जाए. Kavya is having fun. And the green girl, green. The grass is green, and Kavya is green. Come. I'm a Christmas tree. Oh wow! A Christmas tree in the church in Pisa. Come. Church में. Why? No videos are allowed. No, it's allowed. It's such a beautiful church. From up. बहुत ही बड़ा है. यहाँ पर कैमरा अलाउड है, but I can't speak so loud. इसलिए मैं आपको अंदर से पूरा चर्च दिखाती हूँ. Because it's Christmas time also. It's a guide. Sorry. Kavya? Charity and चर्च से भी हम अंदर प्रे करके और विजिट करके आ चुके हैं. सो अभी मैं आपको बताऊं, जो मनीष भी ऊपर गए थे, दैट द क्लॉक टावर, पीसा टावर, दैट टिकट ऑल्सो इट वॉज 20 यूरोज़ पर हेड. तो 20 यूरोज़ तो हमने स्पेंड कर दिए हैं ऊपर जाने के लिए, एंड द चर्च वॉज फ्री. बाकी जो ये दोनों हैं यहाँ पर आपको पड़ेंगे 10 यूरोज़ के टिकट परचेस करने पड़ेंगे अंदर इन दोनों ही जगहों में जाने के लिए. काव्या macarons, we'll go to the shop and we'll have macarons. Okay, so today you want to eat pizza or burger? Pizza? It's 5 o'clock. तो ऊपर से लाइट, सूरज ढलने लग गया है और ये लाइटिंग नहीं है, ये एक्चुअली सन रेज है जिसकी वजह से ये इतना कलरफुल दिख रहा है और 2 कलर्स का दिखने लग गया है. सो लुक एट
दिस ब्यूटीफुल व्यू। नीचे से ताजमहल और ऊपर से लाल किला, बिल्कुल 2 कलर्स का खूबसूरत इमारत, बिल्कुल ताजमहल की तरह ही है। आसपास में जो भी इमारतें हैं, चर्च है, तो सफ़ेद पत्थरों से, सफ़ेद मार्बल से, और ऐसा फील भी वही आ रही है ताजमहल वाली। तो यही है कि हर जगह कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी हैं पूरे वर्ल्ड में। वी हैड सो मच फन हियर, और अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पर विज़िट करने का। तो चलिए अभी थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे और कुछ खा पी कर हम निकलते हैं। और आई होप दैट यू लाइक माई वीडियो। कल मिलते हैं अपने नए ब्लॉग के साथ। कल हम जा रहे हैं रोम। टिल देन गुड बाय, सी यू, बाय बाय।